Minister was not given political clearance for his visit to US. Anything on that? And I have a second question. The XP division, I believe, is moving out. Any fond memories from that famous building? सर, शैलेंद्र वांगू, नेटवर्क 18। हमने सबने रिपोर्ट्स देखी हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से जो इलीगल एंक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले पाकिस्तान ने कुछ ऐसा एक्शन लिया था इस्लामाबाद में। इस पे हमारा क्या क्लैरिटी है? कादम्बिनी शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। सर, रिपोर्ट्स हैं कि यमन और सोमालिया में पायरेट्स ने 2 व्यापारिक जहाज जो हैं उनको हाईजैक किया है, जिनमें 22 इंडियन सेलर्स हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि फ़िलहाल वो सुरक्षित हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई जानकारी आप शेयर कर सकें। थैंक यू। ऋषभ। Spokesperson, good evening. Spokesperson, there are reports that Bangladesh is interested in joining MEA Pact, and they have actually shown their willingness to join the MEA Pact, the trilateral pact between Saudi, Pakistan, and Turkey. If we can have a response on that. Manish. सर, मैं मनीष झा हूँ टीवी 9 से। मेरा सवाल है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। वो आएंगे, नहीं आएंगे, या ब्रिक्स में आने का उन्होंने कोई इंडिकेट दिए, तो अगर आप कुछ क्लैरिफाई कर सकें, सो वी विल बी ग्रेटफुल। So let me take these questions first. First, coming to your question, Siddhant, let me say that the visit of chief ministers, as indeed of other dignitaries, are assessed by the Ministry of External Affairs in order to accord political clearance. The program proposed in such cases should be appropriate to the office held and the purpose of the visit. In this particular case, that was not so in respect of the United States, and therefore the clearance was denied, not given. Incidentally, let me also tell you that clearance was given for his visit to the United Kingdom. The second question was regarding movement of XP division from Shastri Bhavan to the new place, Samrat Hotel. Let me say that we have very fond memories of our engagement, interaction with all of you in Shastri Bhavan. We've been there for decades now, so obviously that emotional touch will remain, but we look forward to working with you in our new premises. शैलेंद्र, देखिए, पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायोग है उसके सामने से कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे पार्किंग की सहूलियत के लिए, उसको हटाया गया। इसके बावजूद कि हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि इसको ना किया जाए, तो वो जब हो गया उसके बाद हम लोगों ने अपने रिस्पांस में एक प्रोपोर्शनेट एक्शन कह सकते हैं। उनके यहाँ पाकिस्तानी उच्चायोग यहाँ जो है, उनके लेन में कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम लोगों ने उसको वहाँ से हटाया। कादम्बनी, ये 2 जहाज आपने ठीक कहा, 2 जहाज है। ये दोनों जहाज, इन दोनों जहाज जो कि विदेशी मतलब विदेशी फ्लैग्ड हैं, उनके ऊपर किसी और के झंडा लगा हुआ है, किसी और देश, दूसरे देश का। उसमें भारतीय नाविक हैं 22, एक में 16, दूसरे में 6। ये जो हम लोग को अभी तक पता चला है कि वो 22 जो नागरिक हमारे हैं, जो हमारे नाविक हैं, सुरक्षित हैं, और जो अधिकारीगण हैं उनसे हम इस मामले पर उनसे हम जुड़े हुए हैं ताकि हम अपने लोगों को उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल कर सकें। विशेष जानकारी और मिलने पर मैं आपको बताऊंगा। Rishabh, on your question, look, we continue to closely follow developments that are happening in West Asia. This is what I have to say at this point in time. मनीष, आपका सवाल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को लेके है, तो मैं ये देखिए कहना चाहूँगा कि इस पर मेरे लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर मेरे पास कोई अपडेट होगा तो मैं आपसे साझा करूँगा। केशव। Thank you, spokesperson. Keshav Padmanabhan from the Print. Yesterday, the Forward Seamen's Union of India, FSUI, showed a video of Indian sailors being harassed by what they claim is the IRGC Navy. Has the MEA taken cognizance of this? Is it taking this issue up with Iran?
And secondly, so when we're talking about the the removal of illegal or unauthorized structures outside embassies, when you know, look at various embassies in New Delhi, quite a few of them exist. So will the concerned authorities be looking at all cases to look into these sort of unauthorized constructions? Thank you. Please. सर मैं पूनम पांडे हूँ नव भारत टाइम्स से। मेरे दो सवाल हैं। WMCC 2 बार हो चुकी है, मई और जुलाई में। अमूमन WMCC के बाद कोर कमांडर मीटिंग होती रही है, लेकिन इस बार नहीं हुई है। तो क्यों देरी हो रही है, और ये गतिरोध खत्म करने के लिए LAC पर कब बात होगी, इस पर अगर आप कुछ अपडेट दे सकें। और 2 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ नेपाल में थे, तो जब उन्होंने वहाँ गोरखा रिटायर्ड सोल्जर से मुलाकात की तो उन्होंने अग्निपथ स्कीम का मुद्दा उठाया और कहा कि वो चाहते हैं कि नेपाल के जो गोरखा हैं, युवा हैं, वो अग्निपथ स्कीम का हिस्सा बने और फिर से भारतीय सेना में शामिल हों, क्योंकि जब से स्कीम लागू हुई है तब से बंद है। तो क्या जब से नेपाल में नई सरकार बनी है, भारत सरकार और उनके बीच कुछ बात हुई है, या ये चैप्टर अब क्लोज्ड माना जाए? Uma. So there are reports that in July and August, a lot of Indians have been deported from the US and Canada. Some of them are illegals and some of them are green card holders. Would you have any numbers, or is there, if you can confirm more? Ayushi? So this is Ayushi Agarwal from ANI. So it has been nearly 5 years since Ariha Shah has been in German foster care. Is there any update on her case? Has there been any progress in discussions with the German authorities regarding her return to India? Jessica? Thank you, sir. This is Jessica Taneja for Doordarshan. I have 2 questions. First, Pakistan's Foreign Office summons the US CDA over the comments made by US Ambassador Sergio Gore on Jammu and Kashmir being an important part of India. Any response to that? And second, recently the Secretary CPV and OIA visited Palestine. Can you tell us about the outcomes of that visit? So first, coming to Keshav, your question. As we have said this time and again, and I would like to reiterate, the welfare and safety of our seafaring community is a matter which we take very seriously, and we attach very high priority to this subject. Having said that, whenever there's an issue with our seafarer community, with our seamen, we take it up with the relevant authorities. In this particular case, let me come back to you as to what has been the progress. The other question was regarding removal of temporary structures, etc. I just gave you an update as to what happened, what was the context in which certain removals happened. WMCC, पूनम आपने जो बताया, देखिए WMCC की मीटिंग हुई, उसको हम लोगों ने आपके सामने क्या क्या उस मीटिंग में हुआ, ये आपको पूरी चर्चा के बारे में बताया आपको। उसके बाद क्या और आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में जब भी कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको हम उससे अवगत कराएंगे। नेपाल में हमारे चीफ सेनाध्यक्ष की यात्रा हुई, बहुत अच्छी यात्रा थी। आपको जैसे मैंने बताया था, उनको वहाँ पर ऑनररी जनरल का रैंक दिया गया है, और इसे दर्शाता है कि इस प्रकार की दोस्ती दोनों देशों के बीच में और दोनों सेनाओं के बीच में है, और बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। जहाँ तक अग्निपथ स्कीम की बात है, ये तो मेरे ख्याल से रक्षा मंत्रालय आपको बेहतर बता सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे सेनाध्यक्ष की अभी नेपाल की यात्रा हुई, वो उससे हमारे दोनों देशों को में और रिश्ते मजबूत हुए हैं, और खासकर रक्षा के क्षेत्र में रिश्ते और मजबूत हुए। Huma, on your question, this is, I don't have an update, but I gave you consolidated figure some time back. Let me come back to you. But just to say that these deportations, they happen. There's a process which is in place. We accept our people, our nationals, only when their credentials are verified and we are certain that they are internationals. But both on US and Canada, I can give you those figures. Ayushi, on Ariha Shah case, I don't have an update on this particular matter, but let me assure you that we have been taking care of her cultural needs, and the embassy has been in touch with her and the German authorities in this particular subject. Jessica, your question was regarding the comments
that came from the Pakistani side. So I see no reason to comment on Pakistan's frustration. This is what I have to say. On the other question that you had on the visit of our secretary to Palestine, let me say that we have been putting out messages and releases and statements on this particular visit. She has visited Palestine from 18th to 20th, so it is a 3-day visit. She visited Ramallah along with other officers. She called on the Prime Minister of Palestine, as also she had high-level meetings with other high-level meetings with the Foreign Minister, the Health Minister, the Labor Minister, and the Education Minister of Palestine. She also met with the diplomatic advisor of the President of Palestine. In her meeting with the Foreign Minister of Palestine, Her Excellency Dr. Warsen Shaheen, she reiterated India's long-standing commitment and long-standing support for a negotiated two-state solution, and she also underscored the importance of addressing the humanitarian situation in Gaza, including through sustained humanitarian assistance and continued dialogue and diplomacy. She conveyed India's commitment to be a strong development partner for Palestine, and during her visit she took part in the groundbreaking ceremony of a 200-bed multi-speciality hospital that we will be setting up in Jenin in West Bank. She also handed over a consignment of life-saving medicines to the Palestinian government. This is for the people of Palestine for their health needs. There was also an MOU which was signed to set up a technical vocational education center, and she reviewed 2 ongoing projects, one on women empowerment, and the other project is where we are setting up the Palestinian Institute of Diplomacy. She also attended an innovation roundtable where subjects such as how India's technology, startup, digital space that can be utilized to connect India and Palestine and create more opportunities for the Palestinian youth. Okay, Kalol first. Sir, as far as Shipya Ranganathan's visit is concerned, earlier we used to hear that India supports two-state solution when it came to Israel-Palestinian conflict. Nowadays we are hearing India supports negotiated two-state solution. So can you please clarify what is this new emphasis on negotiation that India is placing? Because I mean, we understand two-state solution means or meant two-state solution. So what exactly is negotiated two-state solution? Are you suggesting that if a two-state solution is reached through some other means that would be unacceptable to India? Vineet. So Vineet Dixit from Newsgate. There are 2 trading blocks between India and China. One is Nathula. Second is at Shipkila in Himachal Pradesh. When that is likely to be opened, I was asking. When that is likely to be... 3 trading posts, huh? Okay. नीरज. सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे हूँ प्रभा साक्षी से. सर भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाली अमेरिकी संस्था UNCIRF ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे का विरोध किया है और वहाँ की सरकार से मांग की है कि RSS पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनको राजनयिक शिष्टाचार नहीं मुहैया कराया जाए. साथ में एक प्रश्न और है सर कि भारत में चीनी की कमी की खबरों के बीच पाकिस्तान से खबर आई है कि वहाँ की जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने अपनी सरकार से मांग की है कि हमारे पास काफ़ी स्टॉक है, हमको भारत भेजने की अनुमति दी जाए. अगर उनकी सरकार अनुमति देती है तो क्या हम चीनी खरीदेंगे उनसे? चंद्रकला. Good evening, sir. Chandrakala, Republic TV. We have seen a viral video of a Pakistani cleric, Allama Nasir Madani, publicly claiming that Lashkar-e-Taiba's founder Hafiz Saeed sending 10,000 young men as fighters in Jammu and Kashmir. Any response to that? Thank you. Jugal from the Collective Newsroom for the BBC. I'm seeking updates on 2 issues, sir. First is
A couple of months back, a community from Arunachal Pradesh had flagged transgressions from the Chinese side, and they were talking about their grazing lands being inaccessible. I'm just wondering, how do you classify the current situation? Is it resolved? Is it still underway? Are talks underway? And the second is, there was a report just a few hours ago that 2 ships with almost 20 plus Indians have been hijacked near the Gulf of Aden. Any update on their whereabouts? Thank you. So let me come to these questions. Kalol, I'll have to get back to you on this particular matter, but let me say that we support the 2-state solution, and on further issues that you raised, I'll come back to you. Vineet, we have taken a decision that 3 trading posts will be opened up. Nathula has opened, as you rightly said, and there are other 2 places where points from where border trade happens. Exactly where we are on those points, I'll have to get back to you. But in the last, when we had a meeting some time back, this decision was taken that these trading posts will be activated. नीरज, पहला सवाल आपका, देखिए ये जो संस्था की आप बात कर रहे हैं, जो इकाई की बात कर रहे हैं, ये सबको हमको पता है कि ये एक पक्षपाती संस्था है और कितने सालों से ही, कई एक सालों से ये भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें और साथ में भड़काने वाली बातें ये करता रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे संस्थानों से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान और ऐसे संस्थान के पास अपने खुद के एक एजेंडा होता है और साथ ही साथ इनका कोई साख या तो कोई विश्वसनीयता इसमें नहीं है। तो ये मैं आपके जवाब में कहना चाहूँगा। जहाँ तक आपने दूसरा जो सवाल किया, देखिए भारत पाकिस्तान पे, मतलब पाकिस्तान के पर भारत का क्या पोजीशन है, क्या पॉलिसी है, उससे आप भली भांति अवगत हैं।